Restack. Stack means what? कहवा हमर प्लेट जो बफे रो जो प्लेट जोटा रखा जाए जो प्लेट टा में लास्ट रखिबा से प्लेट टा में फर्स्ट उठेबा स्टैक ऑफ बुक जो बुक टा में लास्ट रे रखिता से बुक टा में फर्स्ट रे उठेता so that is called the stack. So similar way in stack programming first we're defining for working with the collection class रे यूज करिया पे एटे यूज कराला import java.util.stack कराला class stack byte equals to new stack एटी stack रे जो element गुडा का स्टोर करिबा एटा byte format रे स्टोर हो initial stack is empty तो stack टा initially empty रहला तो int I is equals to 0 less than 10 condition is true तो ये जो element गुडा का रहला गुडा सब byte रे convert होला एटा सब integer अछि integer गुडा का byte रे convert होला byte रे convert होला परे element गुडा को store करिया पे we have to use a push method it push method use कराला for storing the element तापर initially stack is empty stack टा empty रहला initially while object is empty जपन object टा empty अछि तपन से element गुडा को गोटे गोटे retrieve करी देखेला okay so if not object is empty it is popping one element pop means retrieve all the element माने गोटे गोटे element को से बाहर करी के एटा शो करिवो pop push means inserting a element आमे गोटे लूपिंग यूज करे लूपिंग रे से कोन करिवो 0 ରୁ 9 जे एलिमेंट स्टोर करिवो एटा में int पास कर जे int को से कन्वर्ट करिवो बाइट बाइट रे केमती कन्वर्ट करिवो एटा में कास्टिंग कले बाइट b इज इक्वल्स टू बाइट i आई जो int वैल्यू गुडा को बाइट रे कन्वर्ट है कि स्टोर होला तो as.push मेथड रे कहां होबो नाउ वी हैव टू इंसर्ट ए record गुडा को इंसर्ट करे पे push मेथड यूज करे तो इनिशियली स्टैक टा एम्प्टी रहिला initially stack is empty so to retrieve the element we are using pop method so now
first initially stack is empty. हमें मतलब push method use करछे से गोटे 0 स्टोर हला तापरे 0 1 1 तापरे 2 तापरे 0 1 2 थिला 3 स्टोर हला तापरे 4 स्टोर हला 5 6 7 8 9 तो एंती 0 रे नेकी 9 पर्यंत एलिमेंट स्टोर हला तापरे हमें पॉप मेथड यूज करे पॉप मींस फॉर removing the element first 9 remove hela tapare 8 remove hela 7 remove hela 6 remove hela 5 remove hela 4 3 2 1 0 okay tapare 0 gala pare eta total blank he gala so it is a popping the element bela push and pop element use kale ए जो स्टैक रो प्रोग्राम कले सब बेले बाइट रे माने करे पे पड़िबो नहीं नहीं एटा इंटीजर रे करी हो मु खाली गोटे एग्जांपल लेकी करिली एटा बाइट रे जेटी इंटीजर लिखि थिले एठी आ एमती हमको कन्वर्सन करी लिखि न दादा हमें डायरेक्ट लिखतांते s.pushb बुझी होची आज्ञा एठी इंटीजर लिखाई देले ए लाइन टाको हमरा दरकार न दादा गोटे आज्ञा आज्ञा एग्जांपल हम ने आज्ञा Okay, so next example, next part में जीवा collection classes होला बे string classes हम पढ़ियो
Okay. So now comes to the string example. The string में क्या string it is used to parse a string. String रे गोटे method अछि जो method हमें कहबा split method. It is used to parse a string, break down the string apart when applied with the character. गोटे string भितर जदि किछि special character अछि से character को से remove करिवो जदि हमें use करिवा split method. It is used to parse a string, break down the string when applied with the character. जदि किछि character अछि से character को break down करिवो और remove करिवो. Now see that example. See there. String set, blue set, red set, black set, maroon set. So we have a string. ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ string ଅଛି ଏ string ରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଗୋଟେ ରହିଛି blue shirt, red shirt, black shirt, maroon shirt. ତାପରେ ହେଲା string result stars dot split. stars dot split ये କାହାକୁ split କରିବ କମା को split କରିବ ମାନେ କମା ଟାକୁ remove କରିବା ଭିତରେ जो କମା ଅଛି ତାକୁ remove କଲା split ମାନେ remove କରିବା କାହାକୁ remove କରିବା କାହାକୁ splitting କରିବ କମା को splitting କଲା କମା को splitting कला ପରେ एटी मोर enhance for loop यूज होला string start colon results तो जहां भी वैल्यू रिजल्ट्स रे अछि सब आसी कि start str स्टोर होला तापर सब एलिमेंट्स हो गला ब्लू सेट रेड सेट ब्लैक सेट एंड मेरून सेट बुझेला हम बुझि पालनी ए प्रोग्राम टा आज्ञा सिंपल प्रोग्राम next is string tokenizer. String tokenizer is also used to parse a string. Okay, so it is also used to remove any kind of symbols. Okay, जदि किसी symbol अच्छे symbol को remove करिवो as well as जदि किसी space अच्छे से space को भी remove करिवो. It is remove all the thing. It is remove the space as it is remove any kind of what you can say uh, space and another is any symbol. माने दीटा को remove करिवो space को remove करिवो और symbol को भी remove करिवो. It is used to purge a string, allow accessing tokens by iteration. So now see the example.
The string set, blue set, red set, black set, maroon set, string tokenizer. For implementing the string tokenizer, we are using a class import java.util.string tokenizer. We're using the class import java.util.string tokenizer, string set, blue set, red set, black set, maroon set, string tokenizer st equals to new string tokenizer. We remove comma and space. ये comma में भी remove करियो, space remove करियो. यदि हमें while loop यूज कले, while loop रे कहाँ होगा st dot has more tokens. माने जे पर्यंत comma और space अच्छे से comma and space को remove कला. तापरे प्रथम देखला blue, तापरे set red, तापरे set black, तापरे set maroon, तापरे set तो यही भली हमको splitting करी चलियो. बुझियला example टा? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Regular expression. Regular expression, it is used to match a string of a text. String of a text. गोटे सेंटेंस भितर किछि टेक्स्ट टा को जदि मते सर्च करिवार अछि ताले मो रेगुलर एक्सप्रेशन इट यूज करिवि. It is used to match the string of text. It provides detailed vocabulary. It is used to search and extract or replace a string. मु किछि स्ट्रिंग टा को सर्च करिवा को चाहूची गोटे सेंटेंस भितर किछि एक्सट्रैक्ट करिया को चाहूची किछि रिप्लेस करिया को चाहूची ताले मो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करी. Regular expression, it is basically it is used to match a string of a text. It provides a detailed vocabulary and it is used to search, extract or replace a string. मु सर्च करि परिबी, extract करि परिबी और replace करि परिबी. गोटे मन Java object is used regular expression. Java objects are used regular expression. Pattern matcher, pattern syntax exception, java.util.regex. Okay, so for the regular expression, you are using pattern class, matcher class, pattern syntax exception, java util.regex package. तो हमर जो रेगुलर एक्सप्रेशन बा स्ट्रिंग ऑपरेशन जदि हमको करिवार अछि तो हमें एटा यूज करिवा गोटे पैटर्न यूज करिवा गोटे मैचर यूज करिवा पैटर्न अंडर पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन अब पूरा इंप्लीमेंट करियो कहले हमें java.util.regex पैकेज यूज करिवा.
Now, pattern object, जो pattern जो class अच्छी तारा actually काम कौन? Pattern object define the regular expression. किसी माने जो ठु हमारा search करिवार अच्छी information टा, सेटा pattern ने define होगा. Matcher object का काम कौन? ना matcher object specify the target string to search. माने को string टा को मु search करीबी, सेटा रहिबो matcher under रे. Pattern and matcher object work together. Pattern and matcher dita ekka sangare kaam karibo. Pattern object define the regular expression. Matcher object specify the target string to search. Pattern and matcher object work together. Eta ekathe kaam karibo pattern and matcher. The following table shows the character class pattern to be searched. Eta buji parlo a line ta pattern matcher au pattern matcher kaam. तबरे ऐसा character class pattern ने हमें use करिबा dot symbol एटा dot अछि dot means matches any single character गोटे sentence भितरे जदि गोटे single character टा को मते search करिवार अछि तले मु dot use करिवि so dot matches any single character it may be a letter digit special character etc abc means से हमरो गोटे sentence भितरे एमिति letter को search करिवो it may be a maybe B or maybe C. Cap ABC means would match any character that is not A, B or C. A, B, C को छाड़ी क्या हो जहाँ character अच्छे शो करिए. A to C means a range of character. A रू C भीतरे जो character थे वो सारा search करियो. एटा होची or symbol means alternation. It is essential. Or alternation indicator means in place of this character you can include another character that is alternation. Now comes to next part. It was the best of time. It is a sentence. It contains it was the best of time. And here I pass here w.s. W.s means it is searching for W ended with S in between any character. It start with W ended with S. माने a sentence भितरु से एमती word search करिवो जार starting रे W थिवो end हेतिवो S in between any character. WABCS starting with W okay so WABCS it was the best of time means it start about W ended with S okay आ भीतर जे कोन से कैरेक्टर ही परिबो ABC T cap EAO MES starting with a T ended with MES start about T ended with MES EAO को छाड़ीगी माने EAO except EAO को छाड़ीगी आउ जहाँ कैरेक्टर थे उसे शो करियो नाम शो करियो टाइम्स it was the best of times starting with T ended with MES okay and in between except from EAO को छाड़ी के और जहाँ कैरेक्टर थे वो इंक्लूड करियो
A character class are used repeatedly. There are these are turned into the predefined character class. Slash D represent a single integer. Slash W it is used for word character. Slash S for white space character. Slash D for integer. Slash W for word. Slash S for white space. So these are called as the what character class. Okay, the sentence होइला Joe told me 20 ways to san Joe's in 15 minutes. Joe told me 20 ways to san Joe's in 15 minutes. तो एठी हमर दीटा रहला वैल्यू गोटे 20 रहला गोटे 15 रहला. Okay, so it return you 20 and 15. 20 and 15. Okay, so it means what? माने जो जगह रे स्लैश डी जतला यूज करिवा से सेंटेंस भितर सर्च करिवा को जगह रे 2 digit integer अछि तो एटी 20 अछि एटी 15 अछि 20 and 15 देखिएबा स्लैश s in स्लैश स्मॉल s से सर्च करिवा in आगरे गोटे स्पेस एंड पछरे गोटे स्पेस जदि हम लिखिबी स्लैश कैपिटल S in स्लैश s it means it search for in without any space बिना स्पेस रे जोटा देखियो MINE स्लैश in स्लैश कैपिटल S Okay, so next is quantifier example. Quantifier example is if you are using star, the previous character repeated 0 and more time. Plus means the previous character is repeated 1 or more time. Question mark means the previous character appear once and not at all. Slash n means the previous character appear exactly n time. M to n the previous character appear m to n time. M means the previous character m more time. Then XS n the group of character repeated n time. So star means previous character repeated 0 and more time. Plus means the previous character repeated more than one time. Question mark means the previous character appears once and not at all. N means the previous character appear exactly n time. तो एटी देखो एटी हम देखिबा हमें जदि लिखिबा
long ago in a galaxy far away. If I write ago dot star, that means it is starting from ago ended with away. If I write gal dot 3, so after gal it is printing you 3 character galaxy. If I pass long 2, it is printing you long 2 times. Okay, so it is a character quantifier example. Grid-edness principle is what? Long ago in a galaxy far away. That means मुझे जो लिखिबी ago dot star far से ago रू नहीं कि far पर्यंत जीवो. Now question mark means it limit the searching. Ago dot star question mark far starting from ago ending with fast far. Second far पर्यंत जीवो नहीं. Fast far पर्यंत जीवो. बुझिला? गिरिजा? The boundary character class, मुझे तो लिखी भी cap matches the beginning of the line, dollar matches the end of the line, slash b matches the start and end of a word. तो ये देखो, it was the best of time or it was the host of time. मुझे तो लिखी भी cap it star dot star question mark times. That means एठी देखो, एठी गोटे it अछि, एठी भी गोटे it अछि. से search करिबो beginning of the line. Cap means searching from the beginning of the line. मुझे तो लिखी भी // 8 yes 8 times dollar it search from second it माने second part जो it अछि सेला search करियो एता मु लिखी भी // b or // b it is searching for or before one space or after one space एटा को से search करी देखिए एटा ला boundary class. Okay, so next class रे आरो सब practical तुम देखिए चलो.